Hey guys, welcome back to my channel. In this video, I'll be discussing certain questions related to the chapter Equation of the Straight Line. So the first question is, find the equation of the line passing through the point P. This is the points x coordinate and the y coordinate, making an intercept of the 3 on the y-axis. Since all things are given and we have the general equation in which we require 3 things and these 3 things are given. So we can basically find out the slope directly only. But the other way to do was, right, you could take this graph, and this was a point 3. So this is an intercept, as I told you in my first video of this chapter. So the second coordinate would be 0, 3, because this is the intercept. So this is the point 3 and this is the 0, isn't it? And one point is given and the other point is hidden, isn't it? So this was a one method, and then you will find out the hidden point also, that is intercept. This is 3 and then 0, 3 will be the coordinate, and you can find out the slope by applying the formula of y2 minus y1 upon x2 minus x1. This was the one way. Or you could have used directly the intercept of the 3 because y. So you see, one way was to find like this, that is we are having the 2 coordinates, and the other way that is much simpler than the first method, that is 2 points were given, that is the x coordinate and the y coordinate is given, and this y intercept is also given, right? So you can just apply it in this general equation, and then you can find out the slope from this general equation. Okay, that you will find as 1 by minus 2. And then you have to apply the formula again by taking x and y as the coordinate. Okay, and the formula which we used in our last video also. And by applying this formula, because equation is always in the form of x and y, you can find out that will be minus 1 by 2, y minus 4, x plus 2. You can pick up either this point, that was a hidden point, or you can directly pick up this point also, and then you can again apply it in the formula of the slope, that is y minus y1. So one extra point you require, and one point is that which has certain numeric values, and because the equation is always in the form of the x and y. So then you can solve this, and you will get, at the end you will get this minus 1x minus 2y plus 6, and you can take the minus common, or you may keep it like that only, and this will be the equation. This is the equation you will get. So what we did in this question, one method only I will be discussing now. X coordinate and y coordinate were given to us, y intercept was also given to us, we applied it in the equation directly, and we find out the slope. Okay, and how do we find? So now you see here, m is equal to y minus y1 upon x minus x1. So if you don't know how to still find the equation and you are still getting confused, please go and watch the second part of the video. Okay, we have taken this extra y and x because equation ke liye we want one extra x and one extra y. So now our second question is, find the equation of a line passing through this point minus 2, 3 and having x intercept, not the y intercept. Here that formula, that is y is equal to mx plus c, will be quite difficult to apply. Okay, and here you need to apply the other method only. This is the x intercept. Here also one point is given to us and the other point is hidden. How? I told you like this, for example, this is the 4 unit. So this here, from here to here, the distance, that is we call it as a x intercept. So the obviously यहाँ पे अगर कोई point है तो उसका coordinate क्या होगा, 4, 0. तो एक coordinate है हमारा -2, 3 और दूसरा coordinate है हमारा 4, 0. उसमें से हमने slope निकाल ली और जो कि हमारी आई -1 by 2. अब because equation, अब हम वही formula एक बारी और लगाएंगे, ठीक है? कौन सा वाला? m is equal to y2 minus y1 and x2 minus x1. Because equation is always in the form of y and x, we cannot use this. We require one extra y and one extra x, and we can use the other y and x
we can pick other x and y from either of these two coordinates. Okay, and then y minus 0 upon x minus 4, and then you can solve it out, and at the end you will get this equation. You can leave it here or you can find out the माइनस को कॉमन निकाल कर आप उसे इवेल्युएट कर सकते हो. आई होप इट्स क्लियर कि हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा y और एक एक्स्ट्रा x क्यों ले रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट पिछला वाला क्यों ले रहे हैं, मतलब दोनों ही पिछले वाले क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एंड इक्वेशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई. तो उस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लेट कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा एक्स और एक एक्स्ट्रा वाई को, और बाकी के दो पॉइंट्स जो है वो हमारे एक मतलब बाकी के कोई भी एक कोऑर्डिनेट को उठाकर एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in triangle ABC in which these three coordinates are given to us, they are the vertices and we need to find the equation of the medium through A. तो हमने ये triangle बना ली, उसमें हमने A, B, C पॉइंट मार्क करे और A से हमने एक मीडियन बना लिया इस लाइन पे. अब हमने देखा, अब हमने छोटी क्लासेस में सीखा था, हम किसी भी पॉइंट से मीडियन बनाते हैं ना, तो ये जो जहाँ पे आके वो आता है ना जहाँ पे, तो ये उसका मिड पॉइंट होता है. ठीक है, अब आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी करा होगा सेक्शन एंड मिड पॉइंट वाले चैप्टर में, है ना. वो चैप्टर में अभी हम करेंगे वो चैप्टर भी, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज द फॉर्मूला कि x1 प्लस x2 अपॉन 2 ये x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए. अब हमें पता चल गया कि जब भी हम किसी मीडियम को यहाँ पे आके उसे करेंगे, पॉइंट को मार्क करेंगे, तो ये उसका मिड पॉइंट होता है बेसिकली. दिस इज द x1, दिस इज x2, और यू मे टेक दिस एज x1, दिस इज x2, यू विल गेट द सेम आंसर. सो यू सी 7 प्लस 1 अपॉन 2, 8 प्लस और ब्रैकेट में माइनस 10, यू विल गेट 8 माइनस 10 अपॉन 2, एंड नाउ यू हैव गॉट दिस कोऑर्डिनेट. अब आप सोचोगे कि हमने कोऑर्डिनेट निकाला क्यों, बिकॉज हमें इसकी स्लोप निकालनी थी. ठीक है, हमें इसकी स्लोप निकालनी थी. तो जब हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, हम वही पुराना फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, देखो -1 y2 और ये -5, इसको चाहे y2 मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपॉन ये हमारा 4 -3, तो आपको एंड पे आंसर मिलेगा -6. अब हम इससे इक्वेशन निकालेंगे, वही पुरानी चीज जो हमने करी थी. -6 इज इक्वल टू y माइनस ये कोऑर्डिनेट उठा लो, चाहे ये कोऑर्डिनेट ये वाला है. ठीक है, कोई मर्जी सा निकाल कर, और एक हमें एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि इक्वेशन के लिए हमें x और y चाहिए होता है. सो इस तरह से हम करेंगे y माइनस 5 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -6, एंड देन यू कैन सॉल्व द इक्वेशन. ओके, बट यू वुड बी थिंकिंग कि हमने यहाँ पे हमारे पास था तो एक्स वाई, तो हमने सीधा क्यों नहीं निकाल लिया, बिकॉज तब हमारे पास स्लोप नहीं थी. तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, यहाँ इस पॉइंट को निकाला, और इस पॉइंट को निकालकर हमारे पास दो पॉइंट आगे हमने स्लोप निकाल ली, और उसके बाद हमने एक्स्ट्रा एक्स और वाई पॉइंट उठाकर उससे स्लोप वाला फॉर्मूला लगाया और फिर हमने इक्वेशन निकाल ली.